Welcome back, guys. We are covering almost all important comprehension. Those are very important for NQT point of view. In this video, we are covering comprehension section 16. I hope you are enjoying these videos and understood paragraph easily. This is very important topic. So let's start our video. There was a marked difference of quality between the personages who haunted the near bridge of brick and the personages who haunted the far one of stone. पत्थर के डोर वेल पुल और ईंता के पास वाले पुल के आसपास घूमते लोगों में एक स्पष्ट अंतर था. Those of lowest character preferred the former. Adjoining the town, they did not mind the glare of the public eye. सबसे नीचे चरित्रा वेल लॉग पहले वाले पुल को पसंद करते थे, जो शहर के पास था. उन्हें लोगों की नजरों की चमक की परवाह नहीं थी. They had been of no account during their successes, and though they might feel dispirited, they had no sense of shame in their ruin. उन्होंने अपनी सफलता के दौरान कभी कुछ खास नहीं किया था, और यदि वो उदास महसूस करते, तो भी उन्हें अपनी बर्बादी पर शर्म का एहसास नहीं होता था. Instead of sighing at their adversaries, they spat, and instead of saying the iron had entered into their souls, they said they were down in their luck. अपने विरोधियों पर साय करने के बजाय वो थूक देते, और आयरन उनकी आत्मा में घुस गया था. ये कहने की जगह वो कहते कि उनका नसीब खत्म हो गया है. The miserables who would pause on the remoter bridge of a politer stamp, persons who did not know how to get rid of the weary time. वो दुखियारे लोग जो डोर वेल पुल पर रुक जाते थे, ज्यादा तमीजदार स्टैम्प वेल लॉग, जो थके हुए समय को कैसे गुजर देना है, ये नहीं जानते थे. The eyes of his species were mostly directed over the parapet upon the running water below. उनकी प्रजाति की आंखें अक्सर पैरापेट के ऊपर से नीचे बहते पानी को देख रही होती थी. While one on the downward bridge did not mind who saw him so, and kept his back to the parapet to survey the passerby, one on this never faced the road, never turned his head at coming footsteps, but, sensitive on his own condition, watched the current whenever a stranger approached, as if some strange fish interested him, though every fin thing had been poached out of the rivers years before. जबकि शहर की तरफ वाले पुल पर कोई भी उसको देख ले, उससे फर्क नहीं पड़ता था, और वो पैरापेट के पीछे अपने पीठ करके गुजरने वालों को देखने में लगा रहता था. यहाँ वाला कभी भी सड़क को सामने नहीं देखता था, कभी अपना सर नहीं घुमाता था, लेकिन अपनी हालत से भावुक, वो हर बार एक अजीब मछली की तरह पानी को देखता, जैसे कोई नई मछली उसे दिलचस्पी दे रही हो, लेकिन हर एक पिंवाला प्राणी तो सालों पहले नदियों से मार दिया गया था. Now based on this explanation you can start questions and guessing which answer is correct.
Thanks for watching. We are coming with more questions and their solutions and explanation. Please like, share and subscribe for more videos.